हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया यूनिट दैट इज यूनिट 5 हम डिस्कस करेंगे एज एनसीईआरटी अपडेट हुआ है। उस रिगार्डिंग हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कवर करने की कोशिश करेंगे एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। यूनिट 5 इज डिस्क्राइबिंग अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस यूनिट में टोटल 6 चैप्टर्स है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, body fluids and circulation, excretory products and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, then at the end chemical coordination and integration. Okay, so ये सब life processes that a living organism need to perform. Okay, so that they have to exist or they have to interact with the environment. Okay, this is the basic activities that every living organism need to perform. Okay, then in the as this is the अल्फांसो कोटिकी, हम इस साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि इसको मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में। ये एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। ये वाज बोर्न इन 1882 एंड डाइड इन 1888। उनका करियर स्टार्ट हुआ था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स में, बट उसके बाद उनका अटेंशन शिफ्ट हुआ एंड वो ऑडिटरी सिस्टम में काम करने लगे। वो उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ आवर कोक्लिया कॉन्टेनिंग हेयर सेल्स। ओके, तुम्हारे अंदर जो साउंड वाइब्रेशन जाता है, तुम जो भी साउंड सुनते हो वो वाइब्रेशन है ना। साउंड क्या है? वाइब्रेशन है। साउंड वाइब्रेशन को हमारी कोक्लिया के पास, ईयर के अंदर 3 हड्डियां हैं, इनकॉस, स्टेपस, मालस। वो हमारे वाइब्रेशन को कैप्चर करते हैं, ठीक है, एंड एम्पलीफाई करके कोक्लिया में पहुंचाते हैं एंड कोक्लिया के पास। ओके, एक ऑर्गन है जहाँ पे हमारा हेयर सेल्स है जो कि वो साउंड वाइब्रेशन को न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज नीडेड बिकॉज हमारा ईयर से ब्रेन तक अगर उसको साउंड को पहुंचाना होगा तो उसका न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि विदाउट न्यूरल इम्पल्स ब्रेन कैन नॉट डिकोड। ओके, सो the hair cells are acting as a prime member for our ear. Okay, अगर hair cell damage हो जाते हैं then we cannot able to hear again. Okay, then that organ which contains the hair cells is called organ of Corticki because he was identified or discovered this particular organ which has the hair cells. So according to his name only, Alfonso Corticki, the organ name was given as organ of Corticki. Okay. Now let's get started with the chapter breathing and exchange of gases. Okay. ह्यूमन फिजियोलॉजी के हम पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग and exchange of gases. Let us understand first what is breathing. Breathing is included both inhalation and exhalation. Okay, and exhalation. इनहेलेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ गैसेस, whereas एक्सेलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ गैसेस from where? From our lungs. From lungs. Then let us understand exchange of gases. एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से कहाँ होता है?
एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे कहाँ से कहाँ तक होता है? नॉर्मली there are two places where our exchange of gases are occurring. First, from lungs to tissue. Second, lungs to not tissue. Lungs to our blood vessel. Lungs to blood vessels, then blood vessels to टिश्यू. डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो जाए ना, लंग यहाँ है, बॉडी हर जगह है, मतलब हर एक सेल में पहुंचना चाहिए हमारा ऑक्सीजन एंड रिलीज होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह पे होता है. फर्स्ट लंग्स टू ब्लड वेसल, यहाँ पे जो ब्लड वेसल से होता है वहाँ पे ट्रांसफर होता है. देन दैट ब्लड कैरीड टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. Then again exchange of gases happening from blood vessel to tissue. Okay, exchange of gases क्यों होता है? Because हमारा why every cell metabolizes. एवरी सेल में क्या होता है? अरे एवरी सेल कैटाबोलिक रिएक्शन होता है. व्हाट इज कैटाबोलिक रिएक्शन? कैटाबोलिक रिएक्शन मतलब ब्रेकिंग डाउन of carbohydrate, protein, amino acid, न्यूक्लिक एसिड. हम जो चीज़ इनटेक करते हैं वो सब चीज़ हमारे अंदर जाता है. तो वो सब चीज़ के ब्रेकिंग डाउन होने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है. क्यों ऑक्सीजन चाहिए होता है वो बात करेंगे हम. बट क्या हमारे सेल के अंदर क्या क्या होता है पहले हम वो नोटिस कर लेते हैं. ठीक है. एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोनेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीज़ होता है एक्सेट्रा. ये सब हम क्यों ब्रेकिंग डाउन करने का नीड है? बिकॉज द प्राइम थिंग इज वी नीड अवर एनर्जी. ओके, टू फुलफिल एनर्जी नीड. We need energy to conduct several activities by our body. So that energy requirement पूरा करने के लिए we need food. We have acquired food. Now the food need to be broken down and have to perform catabolic reaction. And उस catabolic reaction के लिए we need oxygen. And वो oxygen the catabolic reaction के लिए ऑक्सीजन चाहिए. एंड आफ्टर दैट रिएक्शन, आफ्टर दोज breakdown, CO2 is released. Okay, CO2 is harmful for our body. CO2 is harmful for our body. Okay, so CO2 need to be excreted out. Okay, so पहला चीज
वो सब ब्रेक डाउन करने के लिए डिफरेंट लाइक माइक्रो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन, एंड वो रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. सो ये बोथ रीजन है. वी हैव टू intake oxygen and we have to release carbon dioxide. To perform this action, we breathe. Okay, and this have to happen like the breathing need to be performed continuously so that we can supply our oxygen continuously and release our carbon dioxide continuously. That is why that is how we can maintain ourselves energetic and do certain activities which we want. Okay, now NCERT पढ़ते हैं. As we have read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down of simple molecules like glucose, amino acid, fatty acids, etc. To what? To derive energy, to perform various activities. Okay. Then carbon dioxide is harmful, is also released from this catabolic reaction. Okay. Carbon dioxide which is harmful, which is released during this catabolic reaction. Therefore, it is evident that O2 have to be continuously provided to every cell, and CO2 produced in our cell have to be released out continuously only. This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by our cells is called breathing, commonly known as respiration. But respiration बस वो नहीं है. रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीथिंग, जो कि ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना को बोला जाता है. प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट एंड यू कैन फील योर चेस्ट मूविंग अप. Okay, you know that it is due to the breathing. How do we breathe? Now you can answer, how do we breathe? Okay, the respiratory organs and mechanism of breathing are described in the following section of the chapter. The breathing के actual mechanism कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे.